Hello students, in this video we will look into the geometrical interpretations of cross product, or more precisely modulus of cross product. For that, consider two non-collinear vectors A and B. Vectors A and B are non-collinear vectors. Okay, suppose angle between vectors A and B is theta. Okay, with these two non-collinear vectors, we can construct a parallelogram or triangle. Okay, so here we have this parallelogram formed by two non-collinear vectors A and B. This side is vector A. Okay, AB is vector A, and this side vector AD is vector B. Angle between vectors is theta. Okay, and this is a parallelogram. Okay, we can also consider this triangle. दो नॉन कोलिनियर वेक्टर से हम एक ट्राइंगल या एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं स्पेस में. ठीक है ना. ओके, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी. Suppose modulus of A is A and modulus of B is B. Okay, then what will be area of this triangle? Area of triangle ABD will be ABD will be 1 upon 2 into base into height. This length is A. Okay, base is A. What will be height? In this right angle triangle, suppose this is m foot of perpendicular from D upon AB. Okay, then height dm will be B sine theta. Okay, so area of triangle ABD is 1 upon 2 base into height A into B sine theta. ठीक है, and AB sine theta is actually modulus of A cross B. AB sin थीटा क्या होगा? वो A क्रॉस B का मॉड्यूलस होगा ना. वेक्टर A क्रॉस B is A into B into sin theta into n cap, unit vector perpendicular to the plane of vectors A and B. Okay, so modulus of A cross B will be this, A into B into sin theta. Okay, so modulus of A cross B is twice the area of triangle, formed by these two non-collinear vectors. Let me write here, modulus of A cross B is equal to twice area of triangle formed by vectors A and B. Okay, and what will be area of this parallelogram? Now we know that diagonal divides parallelogram into two parts of equal area. Area of triangle ABD will be same as area of triangle BDC. Okay, so area of parallelogram ABCD, area of parallelogram ABCD will be, क्या होगा ये एरिया? दिस एरिया विल बी मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B. Half of modulus of A cross B is area of triangle formed by vectors A and B. So area of parallelogram formed by vectors A and B will be modulus of A cross B. ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B जो है वो वेक्टर्स A एंड B से बनते हुए पैरेललोग्राम का एरिया होता है. ठीक है, हमें ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला भी मिल गया. अगर स्पेस में दो वेक्टर्स ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, if two non-collinear vectors are given, certainly we can form a triangle and area of the triangle will be half of modulus of A cross B. ठीक है. Now here if angle theta is 0, then vectors A and B will be collinear. We won't have any two-dimensional figure. वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो ना ट्राइंगल बनेगा ना ही पैरेललोग्राम बनेगा. ठीक है, तो सो कॉल्ड एरिया जो है वो 0 हो जाएगा. आप चेक करो, व्हेन वी पुट योर थीटा इज इक्वल टू 0 वी गेट वैल्यू 0 बिकॉज साइन 0 इज 0. ओके, एंड इफ एंगल थीटा इज 90 डिग्री वी विल हैव rectangle and right angle triangle. ठीक है, triangle ABD will be right angle triangle
एंड एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. आप चेक कर सकते हैं, व्हेन यू पुट योर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वी गेट एरिया 1/2 into a into b, which verifies that area of right angle triangle is half into base into height. Okay, and area of rectangle ABCD will be a into b. ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया तो ये होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बेस इनटू हाइट. ओके ओके, नाउ इन दिस फिगर व्हाट विल बी डायगोनल वेक्टर AC. क्या होगा डायगोनल वेक्टर AC? डायगोनल वेक्टर AC विल बी A प्लस B. ओके, एंड व्हाट विल बी वेक्टर BD. क्या होगा वेक्टर BD? वेक्टर BD विल बी B माइनस A. Vector AB plus BD is AD. Okay, so we have vector A plus BD is equal to B. So vector BD will be B minus A. Okay. Now we find modulus of AC cross BD. Check करते हैं क्या मिलता है. We have modulus of AC cross BD. This will be modulus of A plus B cross B minus A. Okay, this will be A cross B minus A cross A. A cross A is 0. Okay, so we have A cross B plus B cross B, which is 0, minus B cross A, and minus B cross A is A cross B. Okay, so this is twice modulus of A cross B, and A cross B is area of parallelogram ABC. Okay, so we have your formula that modulus of cross product of diagonal vectors of parallelogram is twice the area of parallelogram. पैरेललोग्राम के डायगोनल वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस पैरेललोग्राम के एरिया का डबल होता है. ठीक है, सो इफ diagonal vectors of parallelogram are given, suppose diagonal vectors of parallelogram are P and Q. Okay, these are diagonal vectors. Okay, then area of parallelogram will be half of modulus of P cross Q. ठीक है ना. अगर साइड्स के वेक्टर्स गिवन है पैरेललोग्राम के तो एरिया क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दोस टू वेक्टर्स. ओके, और अगर डायगोनल वेक्टर्स गिवन है तो क्या होगा? हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ क्रॉस ऑफ डायगोनल वेक्टर्स. ओके, ठीक है, तो समझ में आ गया. इस इन फॉर्मूलाज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं.